Very good morning to all of you, my dear friends. This is Shafiq Ahmed, and you're all welcome to your favorite YouTube channel, Let's Learn Together. Welcome back to all of you, my dear students. Today we are going to study about the second feature of democracies, and that is one of the heading that you can see below that feature of democracy. What is written there? Free and fair electoral competition. That is means if there is an election in the country, in a democratic country, then it should be how? It should be free and fair electoral competition. There should be fair everything. And what is the second feature of democracy? What is it saying? A democracy must be based on a free and fair election. Free means no one should be charged for voting. You know? It should be free and everyone should be allowed to vote, the adult citizens of the country. So a democracy must be based on free and fair election should be there. There should be nothing, there should not be any type of cheating in the electoral competition or while voting. There should not be any type of cheating in a democracy. So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power, that is the second line that I'm going to read, that is quite important, my dear students, where those currently in power have a fair chance of losing, means those who are in the power right and currently in the country, such as in India, BJP government is in power right now, and in China we will go through. So whoever is in the power at the current time during election, they must also have a fair chance of what? Winning, not winning, of losing. They must also have a fair chance. उनके पास भी ये चांस होना चाहिए कि वो भी हार सकते हैं, है ना? अगर ऐसा नहीं है, अगर वो करेंटली जो पार्टी है वो पूरे पावर का इस्तेमाल कर रहा है कि वो हार नहीं जाए, वो जीत जाए, तो ये फिर डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर को वायलेट करेगा, है ना, ब्रेक करेगा. तो इसके लिए हम लोगों को बचना है और हम लोग दो कंट्री को चेक करने वाले. वी आर गोइंग टू चेक टू कंट्रीज वेदर दे आर running or doing free and fair electoral competition or not, whether they really fit according to this particular second feature of democracy or not. I will ask you after discussing about our Chinese bhai, है ना, that is चीनी भाई लोग के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद एक कंट्री मैक्सिको के बारे में लोग पढ़ेंगे. एंड आफ्टरवर्ड दैट आई विल आस्क यू वेदर दे वायलेट दिस सेकंड फीचर और वेदर दे आर doing according to the second feature. If they are ruling, if they are performing their duties according to this particular feature of democracy, then we would be able to say that really they are having a democracy in their country. But to be a democratic country, the country must follow or must fit according to the all features of democracy, not only one feature. Okay, let us see and study about Chinese bhai, that is about the Chinese people. वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, let us see about in China. In China, elections are regularly held after 5 years. Like in India, in China also, they are having elections in every 5 years, And they used to elect 3,000 members. They used to elect 3,000 members of the country's parliament. यानी पार्लियामेंट में 3,000 मेंबर्स को वहां के लोग इलेक्ट करते हैं. और वहां के पार्लियामेंट का नाम क्या रखा गया है, देखेंगे. चाइनीज नेम क्या है? क्वांगो, रेनमिन, डाइबियो एंड दाहुई. इट इज क्वाइट हार्ड फॉर अस टू रिमेंबर, सो वी विल रिमेंबर दिस. नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इससे हम लोग याद रखेंगे. दैट इज द नेम ऑफ देयर पार्लियामेंट. एंड दे यूज्ड टू इलेक्ट 3,000 मेंबर्स इन द कंट्री, अराउंड फ्रॉम होल कंट्री. पूरे कंट्री से 3,000 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है एवरी 5 years. तो यहाँ तक तो ठीक है. दे आर इलेक्टिंग 3,000 मेंबर्स by through the help of the elections. So that is okay. In a democratic country ये होता है. The National People's Congress कमेटी जो है, ये द नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, ये 3,000 मेंबर्स जो है यहाँ पर है. दिस 3,000 मेंबर्स हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ये 3,000 लोगों के हाथों में क्या है? पावर है. दे कैन अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ओके, यहाँ तक भी ठीक है. 3,000 मेंबर्स वो लोग हर 5 साल में इलेक्ट करते हैं, और वो 3,000 मेंबर्स क्या करते हैं? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं कंट्री का. दैट इज ओके. अभी तक कोई चीटिंग नजर नहीं आ रहा है. सम ऑफ द मेंबर्स अमंग 3,000 मेंबर्स. नाउ अब यहां से आप देखेंगे, ये 3,000 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं बाय द आर्मी. द आर्मी पीपल यूज्ड टू इलेक्ट few members, and some of the members we don't know, they do not disclose about their country that how many members they are electing. So we are just saying over here that they used to elect some of the members among 3,000 members.
फ्रॉम आर्मी, आर्मी मैन जो है वो 3000 में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। लेट अस सी आगे क्या होता है। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. That is the wrong thing over here, my dear students. कि किसी भी है ना कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़े होने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए, दे विल हैव टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम ओनली वन पार्टी, दैट इज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा अगर वो इलेक्शन में खड़ा होने चाहते हैं, इफ दे वांट टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। सो ऑल द मेंबर्स हु वांट टू कॉन्टेस्ट, दे विल हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम दिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और भी एक केस है, ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिटी पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट। अलाइड टू इट मींस जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके साथ मिले हुए हैं। वैसे 8 और छोटे छोटे पार्टीज हैं चाइना में। सो दोज 8 स्मॉलर पार्टीज एंड द मेंबर ऑफ दोज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर और ये 8 स्मॉलर पार्टीज के मेंबर, दे कैन ओनली कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। यानी इन्हीं लोगों के मेंबर्स जो है वो 3000 मेंबर्स में से चुने जाएंगे, मतलब इनके मेंबर्स में से ही 3000 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा। मींस आप कह सकते हैं द कंट्री ऑफ चाइना इज रूल्ड बाय ओनली वन पार्टी, दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दूसरा पार्टी है ही नहीं है। कोई दूसरे पार्टी अगर बनाएंगे तब भी उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। दे विल नॉट गेट द अप्रूवल टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन बिकॉज इट इज रिटेन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने ऐसा बनाया है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स या उससे जुड़े हुए जो सपोर्टर्स हैं उनके 8 स्मॉलर पार्टीज और है, they can only elect the contest the elections. So the government is always formed by, अब तो क्या होगा कि गवर्नमेंट हमेशा किसका रहेगा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो ये अब आप देखें हम लोग यहाँ पर, लेट अस सी वेदर China is violating this feature number 2 or whether China is performing according to the feature number 2. So let us move to the next example, that is from Mexico. Mexico का एक example हम लोग लेते हैं और यहाँ पर decide करेंगे what are they doing over here. Let us see. Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years. चलो यहाँ से एक साल ज्यादा है इंडिया और चाइना से, है ना। वो लोग हर 6 साल में एक इलेक्शन कराते हैं और क्या करते हैं, दे यूज्ड टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट फ्रॉम दैट इलेक्शन। चलो यहाँ तक ठीक है, इलेक्शन कराते हैं तो प्रेसिडेंट चुनते हैं, दैट इज ओके, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी चल रहा है काम। द कंट्री हैज नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, दैट इज ऑल्सो ओके माय डियर। अभी भी ठीक है कि कंट्री जो है कभी भी जो है किसी मिलिट्री रूल या किसी डिक्टेटर के अंदर में रूल नहीं किया है। कंट्री को किसी ने रूल नहीं किया है, नहीं तो कोई मिलिट्री ऑफिसर और नहीं कोई डिक्टेटर, दैट इज ऑल्सो ओके माय डियर। बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI। ईयर 2000 तक एक ही पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत रहा था एंड द नेम ऑफ दैट पार्टी इज PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। होना तो चाहिए इसका फुल फॉर्म IRP, लेकिन पता नहीं इसका फुल फॉर्म शॉर्ट में क्यों लिखा है PRI, लेकिन होना चाहिए IRP, है ना, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, लेकिन इसका शॉर्ट में क्या लिखा है PRI पार्टी। लगता है इनका काम भी कुछ उल्टा रहा होगा, है ना, उल्टा सीधा काम करते होंगे। That's why they are also we are using this PRI. Let us see आगे अब ये लोग करते क्या है, ये पार्टी क्या करता है। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है, ये भी ओके, दैट इज ओके। ऑपोजिशन पार्टी है वो भी कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, it should be there in a democratic type of country, opposition should be there। बिना ऑपोजिशन का कुछ नहीं हो सकता, फिर डिक्टेटर टाइप का रूल हो सकता है कंट्री में। so there must be some oppositions also। so opposition parties did contest election but never managed to win, that is the worry over here my dear students। यहीं पर सोचने वाली बात है, यहीं चिंता करने वाली बात है कि why the opposition parties are not winning the election। The PRI was known to use many dirty tricks to win elections। PRI जो पार्टी है क्या उसकी वो किस चीज से फेमस है, that they use dirty tricks to win elections। बहुत सारे कंट्री में होते हैं, खास करके जो लोग सत्ते पे होते हैं, those who are ruling the country, those who are in power, they used to try and use dirty tricks to win elections every time, and that the same thing was doing by PRI party। लेट अस सी क्या वो लोग करते थे ऐसा कि ये कॉन्टेस्ट, ये इलेक्शन जो है वो हमेशा वही लोग जिता रहे।
Why they were winning all the time? What were the dirty tricks played by this PRI party in Mexico? Let us see. Tricks played by PRI party, that is to win election. क्या क्या tricks करते थे? Trick number 1, all those who are employed in government offices had to attend its party meetings. Let us see. अब मैक्सिको में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और वहां पर जितने भी लोग काम करते हैं, दे विल ऑल हैव टू अटेंड द पार्टी मीटिंग एवरी टाइम. जब भी पार्टी मीटिंग होगा, सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज को वहां पर मौजूद होना होगा. दे मस्ट बी प्रेजेंट. ओके, पहला तो ये हो गया. सेकंड, teachers of government school used to force parents. You can see this word over here, my dear students, that they used to force students. Teachers of government school used to force parents to vote for PRI. जबरदस्ती करते थे, है ना. गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पेरेंट्स से जबरदस्ती करते थे कि वो PRI को ही वोट दें. अगर नहीं देंगे वोट तो क्या होगा कि उनके बच्चों को ये फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिल पाएगा. That may be the reason. That's why they were forcing the parents of the government school. Now I'm not talking about private school. I'm talking about government school. Now let us see third trick क्या है. Media largely ignored the activities of opposition political parties. मीडिया भी उनके हाथों में है. मीडिया कभी भी जो है, they do not write or display or publish any good activities of the opposition party. ऑपोजिशन पार्टी जितना भी अच्छा काम करे, कभी भी मीडिया नहीं दिखाता. मीडिया क्या करता है? दे यूज्ड टू ओनली क्रिटिसाइज देम. हमेशा उनके बारे में बुरा भला लिखते हैं और दिखाते रहते हैं मीडिया. So media was also under the control of this PRI party over here in Mexico. और देखते हैं, sometime the polling booths were shifted from one place to another in the last minute. है ना, मतलब 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले जो है, what they were doing, they were just shifting the polling booth from one place to another place, means changing the location of the polling booth. अब ये polling booth क्या है? The polling booth is that place where people used to go and cast their vote. जहां पर लोग जाके बटन प्रेस करते हैं ना इंडिया में, उसको पोलिंग बूथ कहते हैं हम लोग. तो वो अलग अलग लोकेशन में वो गवर्नमेंट, खास करके गवर्नमेंट ऑफिसेज में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है ये पोलिंग बूथ. बट ये PRI पार्टी क्या करते हैं? दे यूज्ड टू चेंज दैट लोकेशन इन द लास्ट मिनट, यानी 1 घंटे पहले हो सकता है या 30 मिनट्स पहले वो चेंज कर देते हैं फार अवे प्लेसेस. अब गया के लोगों को कहा जाए कि पटना जाके वोट करना है, वो भी आधा घंटा पहले, then it would be really very difficult, and many of the people would not turn up to cast their vote because of the changing of the location. So that made it difficult for people to cast their votes. अब बहुत सारे लोग वोट ही नहीं देते हैं क्योंकि लोकेशन चेंज हो गया. That is also one of the dirty tricks, है ना, played by PRI party. This is the fourth one. और एक ट्रिक वो लोग करते हैं, क्या है? The next one, let us see. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate. PRI पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, they used to spend a large sum of money in campaigning, in advertising, है ना, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, है ना, और पोस्टर्स वगैरह लगाने के लिए. They used to spend a large sum of money to win this particular election. These are the few of the tricks that were played by PRI party. Now I want to ask my students whether they are violating or they are according to the second feature of the of democracy. Whether, and you hope that you have liked the video, and we will meet again in our next video release of the tutorial. And if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the information of the next release of the tutorial. Please share it with your friends and others also. Thank you for the time being. Take care. Stay at home. Bye bye. Take care.